Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, dear students. I welcome you all in our online lecture of science. As you know, we are doing the lecture chapter that is 10, light reflection and refraction. This is the part 4 of this chapter, and in this part we are going to start our new topic, that is refraction of light between the two transparent medium. See, we have three transparent medium, that is glass, solid transparent medium, water, liquid transparent medium, air, gaseous transparent medium. These three type of transparent medium we have. Okay. Now, when our light ray is traveling from one transparent medium to another transparent medium, some changes in its path of directions are going to take place. So what are those changes? How they take place? That we are going to learn in our today's lecture in this topic. So before starting that, we are supposed to know about the types of medium through which our light ray is going to pass. So there are two types of medium we have, that is rare medium and denser medium. So what is rare and denser medium? A medium in which number of particles are more compared to its volume. So obviously its density is going to be increased. So such mediums are known as denser medium. And a medium in which number of particles are less compared to its volume. So obviously its density is going to be low. So such mediums are known as rare medium. So medium which are high density wise are denser medium, and which are low density wise are rare medium. So there are two situations. A situation in which your light ray is going to travel from denser to rare, and second situation that is from rare to denser. So what types of changes are going to take place? Let's see to that. So let's take the first situation in which your light ray, it's an incident ray, is traveling from rare to denser medium. So here is the diagrammatic representation of that thing I have drawn. You can see this horizontal straight line is a interface. Interface is a boundary between the two transparent medium. दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में जो बाउंड्री होती है उसे इंटरफेस कहा जाता है. So I have written interface between the two media. And this is your incident ray, and this is the point at which I have drawn the straight perpendicular line known as normal. And at this point your incident ray is going to get refracted and it will become the refracted ray. But you can see that incident ray अगर मैं straight travel करूँ, so this is the actual incident ray. But due to refraction at this point, my incident ray has become refracted ray, and its direction has somehow changed. Its direction has somehow changed. So why that change in direction is taking place, that we are going to learn. So I have written in the note. What note I have written? That when your incident ray, when your light ray is going to travel from rare medium to denser medium, rare medium to denser medium, it will always bend towards the normal. This is the normal. So when my incident ray from rare medium is going to travel in the denser medium, so it will bend towards the normal. वो normal की तरफ झुक जाएगी. So जब भी आपकी इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसे नॉर्मल की तरफ बेंड होना है, झुकना है. So you can see that's why ये जो रे अंदर की तरफ बेंड हो गई है, जबकि आपकी एक्चुअल रे तो ये रे. Similarly, when your ray is traveling from denser to rare medium, so it will move away from the normal. वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी. ठीक है? You can see in the diagram. Now this is my actual ray. But as my light ray is traveling from denser to rare medium, it has to move away from the normal. So you can see it is moving away from the normal. This is my refracted ray. Okay? So these two important points you have to keep in your mind while doing the refraction of any light ray. What are those points? When your light ray is traveling from denser to rare medium, it will move away from the normal. And when your light ray is traveling from rare to denser medium, it will bend towards the normal. Okay, so based on this theory, based on this logic, we have to
learn one topic, that is refraction by rectangular glass slab. It's a very important topic. Actually it's a ray diagram which we are supposed to draw in a page, but actually I have taught you how to draw the ray diagram in our previous lecture. So we are going to see this topic theoretically on this whiteboard only. So what will happen when a reflection of light will take place by rectangular glass slab? You must have visited swimming pool. आपने देखा होगा जो स्विमिंग पूल होता है जब वो empty होता है, when swimming pool is empty, when there is no water, you can easily see the depth of that swimming pool. आपको उसकी जो depth है, उसकी जो गहराई है, वो easily पता चल जाती है. लेकिन जब उस स्विमिंग पूल में हम पानी भर दे, when the swimming pool is full of water, at that time it is very difficult. It is very difficult to measure the depth of that swimming pool. बिकॉज जनरली ऐसा लगता है कि उसकी डेप्थ जो हाइट है बहुत छोटी है, लेकिन जब हम स्विमिंग पूल में उतरते हैं हमारे जैसे एक दो इंसान अंदर चले जाते हैं, इतनी हाइट होती है उसकी, इतनी डेप्थ होती है. सो देयर इज वन टाइप ऑफ इल्यूशन इज टेकिंग प्लेस, है ना, एक छलावा हो जाता है कि दिखता कुछ और है और होता कुछ और है. सो व्हाई सच थिंग्स टेक प्लेस? सो ऑल दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन बाय रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. बिकॉज स्विमिंग पूल में जो पानी है इट्स अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, और स्विमिंग पूल के बाहर का जो मीडियम है इट्स एयर मीडियम. सो आप एयर जो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है वहां से आप वाटर जो दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसमें एंट्री ले रहे हो. सो एयर की बात करें, सो एयर इज अ रेयर मीडियम, एंड जब हम पानी में एंट्री करोगे सो वाटर इज अ डेंसर मीडियम. सो आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि जो लाइट रे है आपकी जो आई विजन की जो रे है इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू द डेंसर मीडियम. और बिकॉज ऑफ दैट जब वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? प्लीज रीड द नोट. लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो आपकी जो विजन रे है इट विल बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल. दैट्स व्हाई आपको एक्चुअल हाइट पता या एक्चुअल डेप्थ पता चलती नहीं है. ठीक है, सो लेट्स सी टू डेप्थ theoretically on this whiteboard. Now see, this ABCD is the rectangular glass slab. It's a rectangular glass slab. It's a glass. So here we are having three mediums. This is our air medium, this is our glass medium, again it's a air medium. That means मेरी जो light ray है वो यहाँ दो बार इंटरफेस चेंज करेगी, जिसमें AB जो है AB is an interface between rare and denser medium. AB नाम का जो इंटरफेस है वो किसके बीच का इंटरफेस है? rare to denser medium का, that is air to glass. और जो CD है it's a second interface and it's an interface between the glass and air, that is denser to rare medium. So a rectangular glass slab में दो इंटरफेस हैं, एक AB that is between air and glass, that is rare to denser. Second interface is CD that is DC, you can say, and it is between glass and air, that is denser to rare. So that means two types of changes are going to take place. ठीक है, when my light ray is going to travel from this different mediums. Let's see to that. Now this is PQ. ठीक है, so for AB interface, PQ is going to be your incident ray and QR is going to be your refracted ray. So when my incident ray PQ from rare medium is going to travel into this glass or denser medium, so it's going to bend towards the normal. So you can see it's bending. इसलिए मैंने QR, PQ और QR को थोड़ा अंदर बेंड कर दिया है. ठीक है, दिस इज माय एक्चुअल इंसिडेंट रे. अगर मेरी एक्चुअल इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देखूं तो देखो ये इस तरह से जा रहा है, लेकिन मेरी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो नेचुरली उसको नॉर्मल की तरफ बेंड होना है. तो देखो मैंने बेंड कर दी. अब क्या होगा, जैसे मेरी QR रे DC इंटरफेस पे पहुंचेगी, so for that DC interface now QR is going to be incident ray. QR जो AB इंटरफेस में रिफ्रैक्टेड रे का काम कर रही थी, अब वो CD इंटरफेस में क्या बन जाएगी? इंसिडेंट रे बन जाएगी. And that QR will get refracted at this point, then it will become RS. So RS is my refracted ray, or it's a final ray which is also known by the name emergent ray. Now when we talk about the refraction at this point R, so my light ray is going to travel from this glass medium to this air medium, that is from denser medium to the rare medium. So it will move away from the normal as per this situation. It will move away from the normal. तो देखो मैंने उसको थोड़ा away कर दिया है, because अभी actually इस ray को
आना चाहिए था ना, लाइक दिस, लेकिन देखो एक्चुअल रे नहीं आ रही है, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है। ओके, सो एक्चुअल इंसिडेंट रे जो थी उसका डायरेक्शन ये रहा, अब फाइनल जो इमर्जेंट रे आई उसका डायरेक्शन ये है। अब देखो दोनों रे एक दूसरे को पैरेलल है, यू कैन सी देयर इज अ पैरेलल, both the ray are parallel to each other, and whatever the perpendicular distance between this emergent ray and the actual ray is there, that perpendicular distance is known as displacement shift or lateral shift, and due to this reason, due to this formation of lateral shift or displacement shift, we are not able to measure the actual depth of that swimming pool, इसलिए वो marginal changes आ जाते हैं। ठीक है, वी हमें लगता है कि पानी का जो सरफेस है, स्विमिंग पूल का जो लोअर सरफेस है वो ऊपर है, जबकि वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, सो दैट इज रिफ्रैक्शन बाय रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर यू। ठीक है, इट्स अ 4 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में आता है, सो यू हैव टू प्रिपेयर इट एट योर होम। So that's all for our today's topic. In this topic we learn about the refraction of light ray between the two media, that is denser medium and rare medium. When my light ray travel from denser to rare, it will move away from the normal, and when it will travel from rare to denser, it will bend towards the normal. And based on that we learn about this theory, that is refraction by rectangular glass slab. Okay, so okay students, now let's move on to our next topic of this lecture. These are the few remaining topics of the chapter. In that, first one is refractive index. Actually we have now familiar with this word refractive index. So what is the definition of refractive index? Okay, when any light ray travel from one medium to the another transparent medium, so the extent to which the refraction is going to take place, the extent up to which the refraction of light is going to take place, so measurement of that extent is known as refractive index. That means refractive index help us to it will give you the knowledge about the refraction of light which is taking place in the various medium. That means जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्शन कितना होगा। ठीक है, उसको उसके मेजरमेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय अ सिंबल n व्हिच इज आल्सो नोन एज ईटा, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब उसको दो तरह से लिखा जाता है, n21 and n12, eta 21 and eta 12. So what do you mean by eta 21? That is refractive index of medium 2 with respect to medium 1. That means हम medium 2 का refractive index find out कर रहे हैं, as a reference किसके refractive index को ले रहे हैं, medium 1। यानी जब हम medium 1 के refractive index का reference लेके medium 2 का refractive index find out करेंगे तो उसे बोला जाता है n21। Similarly जब हम refractive index of medium 1 with respect to medium 2, यानी जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 को रेफरेंस लेके मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करूं तो उसे कहा जाता है n12, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैलकुलेट कैसे करोगे, आप कौन सी क्वांटिटी यूज करोगे टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दैट क्वांटिटी इज वेलोसिटी। You have to consider the velocity of light in various medium, and you have to take the ratio of those velocity. You will get the value or answer of your refractive index. That means, suppose I want to calculate the refractive index of medium 2 with respect to medium 1, तो मुझे क्या करना है, medium 1 की velocity को medium 2 की velocity से divide करना है। जैसे मैं medium 1 की velocity को medium 2 की velocity से divide करता हूँ, I will get the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Similarly, if I want to take refractive index of medium 1 with respect to medium 2, तो मुझे क्या करना है, I have to divide the velocity of light in medium 2 by velocity of light in medium 1. यानी जैसे मैं light की velocity in medium 2 जो है उसे light की जो velocity है medium 1 उससे डिवाइड करूंगा तो I will get the refractive index of medium 1 with respect to medium 2. So इस तरह से इसका फॉर्मूला है। ठीक है, now there is one more term in your textbook, that is absolute refractive index. So what do you mean by that word absolute? यानी when you find out the refractive index
of any particular medium by taking the reference of vacuum as a medium। यानी जब आप वैक्यूम को एज अ रेफरेंस मीडियम लेते हो और फिर किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हो, इन दैट सेंस, इन दैट कॉन्टेक्स्ट योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन बाय द नेम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसका नाम क्या बन जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। That means again you have to divide the velocity of light in vacuum by velocity of light in medium, so that is c by v। Now c is the symbol for the velocity of light traveling in vacuum, यानी जो सन की रेज वैक्यूम से आती है, स्पेस इज अ वैक्यूम, हमारा जो स्पेस है इट्स अ वैक्यूम, तो वहां स्पेस में जब सन की रेज, सन की लाइट रेज जब ट्रैवल करती है तो उसे कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जहां उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी हमारी जो सन की रेज जो स्पेस में ट्रैवल करती है उसकी स्पीड क्या होती है स्पेस में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। Okay, 3 × 10⁸ meter per second, that is the speed of light in space, which is also known as speed of light in vacuum. So when for finding the refractive index of any medium, if I take vacuum as my reference medium, ठीक है, then I have to divide the velocity of light in vacuum by velocity of light in that medium. So I will get the value of refractive index, or I can say absolute refractive index of that medium। यानी जब आप दो मीडियम के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हो तो उसको सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोला जाता है, लेकिन जब आप दो मीडियम में से किसी एक मीडियम को वैक्यूम ले लो एज अ रेफरेंस, सो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका नाम क्या बन जाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो this is for this topic. Now the last two remaining topic of our lecture, means chapter, and also for this lecture, that is Lenz formula। ठीक है, now I want to make one thing clear to you in your board exam, as per the 30% reduction from this chapter, no sums or numericals are going to be asked in the board exam। board exam में इस chapter के जो बड़े-बड़े numericals हैं, जो sums है, Lenz formula, mirror formula, नहीं आने वाले, ठीक है। हाँ, लेकिन जो छोटे-मोटे सम्स हैं वो शायद आ जाए, जिसके लिए हमें इन फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, तो दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। ठीक है, ओके। सो Lenz formula is 1/v minus 1/u is equal to 1/f, in which u is your object distance, v is your image distance, and f is your focal length। Now magnification, because Lenz has a magnification, ठीक है, वो कितना मैग्नीफाई करेगी इमेज को, so that is magnification। So to calculate that magnification we have two formulas, one is h dash upon h, in which h is object height, h dash is image height, and second formula is v by u, again of image distance divided by object distance। Okay, then now this sign convention you have to keep in your mind, that for virtual and erect image, when your lens form virtual and erect image, for such image your magnification is always going to be positive। यानी जब भी आपकी लेंस वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगी आपका मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। उस तरह से अगर आपका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो आपकी लेंस कैसी इमेज बनाएगी? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, सो फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन यू विल हैव वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, एंड फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन यू विल हैव रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज पावर ऑफ द लेंस। So how will you calculate the power of the lens? So power of the lens is 1/f, ठीक है, is the reciprocal of the focal length, is the reciprocal of the focal length। You have to take the reciprocal of your focal length, you will get the power of your lens। Now one thing as a note you have to keep in your mind, while calculating the power of the lens you have to compulsory take the focal length in meter unit। आपको फोकल लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर में ही लेना पड़ेगा, आपको शायद सेंटीमीटर में दे दिया जाए, सो यू हैव टू कन्वर्ट दैट सेंटीमीटर इनटू अ मीटर व्हाइल यूजिंग द फोकल लेंथ इन द पावर टू कैलकुलेट द पावर। ओके, नाउ यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्ट्रे and its symbol is capital D। Now this two important MCQ for you, for convex lens power is always positive, for concave lens power is always negative। That means for convex lens your power is going to be positive, for concave lens your power is going to be negative। Okay, so here we finish our lecture and we have completed or taken all the topic as per the new syllabus
Okay, so our chapter is finished here. We will see you in our next lecture with the new chapter. Now, as a homework, whatever the topic I have taught you in the all the parts of this chapter, you have to write all those related topic question and answer from the textbook and submit it to your concerned subject teacher. Okay, so till then, take care. Bye bye.